Hello everyone. Today I'm going to discuss about Jacobians. So what is and when do we use Jacobians? Here we will see that if we have u and v are functions of the two independent variable x and y, then the determinant we can write like delta u upon delta x, delta u upon delta y, delta v by delta x and delta v by delta y is called the Jacobian of uv with respect to x and y. ठीक है, तो जब इसका जो नोटेशन होता है वो इस तरह से होता है, या तो हम इसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा यू वी यू कमा वी अपॉन डेल्टा एक्स कॉमा वाई, और J symbol u comma v upon x comma y. Jacobian, that means Jacobian of uv upon x comma y. So we can see that first we will take u variable and with respect to x, then again u variable, then with respect to y, and for the second line we have another variable v, then with respect to x, and then differentiation with respect to partial differentiation with respect to y. So this is the case when we are having more than one variable and these functions are depending on those two independent variables. But if we have more than two independent variable, means we have to find out the Jacobian of u v w with respect to x y z, then delta u v w upon delta x y z will be equals to del u by del x, del u by del y, del u by del z, then del v by del x, del v by del y, del v by del z, and then del w by del x, del w by del y, and del w by del z. So this will be the Jacobian of u v w with respect to x, y, and z. So by solving the value of this determinant, by we can get this value. Okay, so we will see one of the question related to Jacobian. So if we have given x is equals to r cos theta and y is equals to r sin theta, then we have to evaluate delta x comma y, del r by theta, and del r by theta, del x by x comma y. So here we can see the order is reversed, which was in the numerator, it goes in the denominator, and vice versa. So first we will find delta x by delta r. डेल्टा एक्स बाई डेल्टा आर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, इस वाले एक्सप्रेशन से कॉस थीटा. ओके, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, इस वाले एक्सप्रेशन से तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा थीटा, here we will find out that will be minus r sin theta. Similarly, we find delta y by delta r, and that is equals to r cos theta. Okay, and delta y by delta theta is equals to wait a minute. So delta y by delta r is sin theta here. Okay, and delta y by delta theta is r cos theta. ठीक है, नाउ हमें ये निकालना है डेल्टा x कॉमा y, डेल्टा r comma theta. Okay, so that is equals to delta x by delta r, delta x by delta theta, and delta y by delta r, delta y by delta theta. ठीक है, delta x by delta r is cos theta,
delta x by delta theta is minus r sine theta, and here it comes sine theta, and now it comes r cos theta. इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, we get r cos square theta प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस r साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों में से r कॉमन आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। So we get this Jacobian of xy with respect to r theta is equals to r. Now we have to find out del r theta with respect to x comma y. Delta r theta, delta r theta, del अपॉन del एक्स वाई, ये निकालना है। तो हमें दे रखा है x इज इक्वल्स टू r cos theta and y is equals to r sin theta। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें r और थीटा की एक्सप्रेशन चाहिए। इसको हम स्क्वायर करें एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको भी स्क्वायर कर दें, ये हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दोनों को ऐड कर दें, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो स्क्वायर से भी लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड अनदर एक्सप्रेशन वी कैन गेट, इसको y बाई x कर दें। जब y लेफ्ट हैंड साइड हमने किया y अपॉन x, तो राइट हैंड साइड में हो गया r साइन थीटा डिवाइडेड बाई r cos थीटा। दैट मीन्स वी गेट साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा, और कैंसिल हो गए। सो tan थीटा is equals to y by x and theta is equals to tan inverse y by x। ठीक है, so we get the expression for theta and we get the expression for r square. Now we have to find out delta r by delta x and delta r by delta y। ठीक है, तो डेल्टा आर बाई डेल्टा एक्स क्या निकलेगा यहाँ से, अगर हम इस एक्सप्रेशन को लें, सो व्हाट वी विल गेट एज डेल्टा आर बाई डेल्टा एक्स, हियर वी will take this expression first, r square is equals to x square plus y square। That means if we differentiate this equation with respect to x, then we get 2r delta r by delta x is equals to 2x। So 2 and 2 are getting cancelled out and we get delta r by delta x is equals to x by r। ठीक है, so we get here delta r by delta x is equals to x by r, and similarly we differentiate this equation with respect to y, so we get 2r delta r by delta y is equals to 2y। That means delta r by delta y is equals to y by
r, ठीक है। तो डेल्टा r बाई डेल्टा y भी हमें मिल गया, वो है y बाई r के बराबर। अब नाउ वी गेट डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स। तो थीटा हमें इस एक्सप्रेशन से मिल रहा है, tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाई एक्स से। सो वी विल yeah, theta is equals to tan inverse y by x. So we will find out from this expression. तो theta is equals to क्या है हमारे पास, tan inverse y by x. So delta theta upon delta x will be equals to minus y upon x square plus y square, or we can write as minus y by r square. Similarly, delta theta upon delta y is equals to x upon x square plus y square is equals to x by r square. Now we can find out, because we get all the terms, and now we can find out delta r by r comma theta delta x comma y is equals to delta r by delta x delta r by delta y and delta theta by delta x delta theta by delta y. So this will be equals to, ये x by r है और ये y by r, ये minus y by r square है, this term is x by r square. We will solve this, so we get x square upon r cube, minus minus फिर से प्लस हो गए, y square upon r cube, और हो गया x square plus y square और नीचे हो गया r cube. तो x square plus y square is equals to r square, that means 1 upon r. तो हमने ये देखा कि जो ये था वो इक्वल्स टू r है और इसका इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r है. What we can write that? No, we can write that अगर हम इनवर्स रिलेशन लेंगे, डेल्टा x कॉमा y अपॉन डेल्टा r कॉमा थीटा into delta r comma theta upon delta x comma y is equals to 1. ठीक है, देखते देखिए r ये आया था, ये 1 upon r आया था, so that is equals to 1. Okay, so if we are having two functions of two independent variable x and y, then we can find out their partial derivative of both the variable with respect to the r or theta, or if we are taking the inverse relation and their product is equals to 1. Okay, so I would like all of you to subscribe my channel and please like and post comment in the comment section.